उपस्थित सभी अधिकारीगण, सम्मानीय अतिथिगण, विश्वविद्यालय के सभी वैज्ञानिकगण, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्राओं, युवाओं, स्टार्टअप उद्यमियों एवं कृषक भाई और बहनों, आप सभी का इस समारोह में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सबके लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी का हमारे धान के कटोरा छत्तीसगढ़ में शुभागमन हुआ है और आज के इस कार्यक्रम में वे हम सबको आशीर्वाद और मार्गदर्शन देंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों, वैज्ञानिकों, छात्रों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मैं स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों की 160 से अधिक किस्में विकसित की हैं एवं 100 से अधिक उन्नत कृषि तकनीकों का भी विकास किया है। उत्तर में बलरामपुर से लेकर दक्षिण में सुकमा तक कृषि महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्र एवं कृषि विज्ञान केंद्र का मजबूत नेटवर्क विश्वविद्यालय के पास है। इस नेटवर्क की सहायता से विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त है। मोदी जी ने हमेशा कृषि के विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। उन्होंने हमेशा नवाचारों, अनुसंधानों और उद्यमिता के विकास को प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। आज छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राज्य सरकार भी मोदी जी के विजन के साथ छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से हम अपने प्रदेश में कृषि विकास को नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेंगे। कृषि वैज्ञानिकों और उद्यमियों की सहभागिता से हम किसानों के जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को खुशहाल जीवन की गारंटी दी है। उनकी गारंटी समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए है। इन गारंटियों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। सरकार बनते ही हमने इन गारंटियों को पूरा करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालते ही दूसरे दिन कैबिनेट की बैठक आयोजित कर प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाख हितग्राहियों के आवास निर्माण की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बजट में 3,799 करोड़ रुपए की राशि का भी प्रावधान कर दिया गया है। मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए हम किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रहे हैं। खरीदे जा रहे धान का भुगतान वर्तमान में समर्थन मूल्य के हिसाब से किया जा रहा है। शीघ्र ही किसानों को अंतर की राशि का भुगतान भी कर देंगे। मुझे आप सबको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष हमने लगभग 125 लाख टन धान की खरीदी कर ली है एवं अभी 11 दिन और बाकी हैं। इस साल अब तक जो धान खरीदी हुई है वह एक नया रिकॉर्ड है। हम हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस साल हम लगभग 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। मोदी जी की गारंटी के अनुरूप हमने किसानों को 2 साल का रुका हुआ बोनस भी जारी कर दिया है।
पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर 12 लाख किसानों के बैंक खातों में 3716 करोड़ रुपए की राशि बोनस के रूप में अंतरित कर दी गई है। मोदी जी ने खेतीहर मजदूरों को भी प्रतिवर्ष 10,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने की गारंटी दी है। महिलाओं के लिए महतारी बंधन योजना शीघ्र प्रारंभ की जा रही है, जिसमें उन्हें 12,000 रुपये प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि स्थापना दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्टार्टअप, नवाचार एवं उद्यमिता तथा पोषण एवं लोक स्वास्थ्य पर संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। संगोष्ठी में भाग लेने के लिए कई महाविद्यालयों के छात्र यहां आए हुए हैं। आप सबने कृषि एवं अन्य विषयों की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। आप अपनी शिक्षा एवं कौशल का उपयोग नए उद्यमों की स्थापना करने के लिए कर सकते हैं। स्वरोजगार अपनाकर आप स्वयं आय अर्जित कर सकते हैं एवं अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। आधुनिक युग विज्ञान एवं तकनीकी का युग है। आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान एवं तकनीक का उपयोग समाज के हित में, देश एवं प्रदेश के विकास के लिए करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार युवाओं को स्टार्टअप को नए व्यापार एवं उद्योग स्थापित करने में पूरी सहयोग देगी। इसी प्रकार हम बच्चों, माताओं एवं आमजनों के पोषण एवं स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने वाले हैं। आज की इन संगोष्ठियों में जो भी अनुशंसाएं प्राप्त होंगी, राज्य सरकार उन पर विचार करते हुए उन्हें क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास करेगी। मैं विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का आह्वान करना चाहूंगा कि प्रदेश के कृषकों के विकास के लिए विशेष रणनीति बनाएं एवं अपनी अनुशंसाएं हमें दें, ताकि प्रदेश के किसानों का कल्याण हो सके। एक बार पुनः आप सभी छात्र छात्राओं, कृषकों एवं वैज्ञानिकों और अन्नदाता कृषक भाई बहनों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ आदरणीय श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी को अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड चेयरमैन रेस्पेक्टेड श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी फॉर हिज एड्रेस। श्री जगदीप धनखड़ जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़, श्री विष्णुदेव साय, ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर छत्तीसगढ़, श्री रामविचार नेताम, डॉक्टर गिरीश चंदेल, वाइस चांसलर IGKV रायपुर, deans, professors, my dear students, dignitaries, and friends of the media. I extend my heartfelt congratulations to Indira Gandhi Krishi Mahavidyalaya, Raipur, on the joyous occasion of the 38th Foundation Day. This remarkable milestone is a testament to the dedication, vision, and unwavering commitment to excellence that the university has constantly demonstrated over the years. We all are very lucky to witness the
Amritakal, independent India as well as Republic of India. As you are aware, that our Honorable Prime Minister Narendra Modi has resolved to make India a leading nation by the year 2047. To fulfill this objective, the biggest Bharat 2047 campaign has been launched on his initiative. Viksit Bharat Sankalp Yatra is being held all over the country, and people are becoming aware of their rights, getting direct benefit of various welfare schemes floated by the government, especially in agriculture sector. Our country has the highest population of youth. Youth has immense potential. They can play an important role in making the campaign successful. So far as this university is concerned, I had a discussion with the Vice Chancellor and what sort of research are being implemented and being done here. He has told me research has been given all priority in this university. And as our Prime Minister has said that this is a days of Anusandhan. And many schemes, as all of you know, has been floated by the Government of India, and agriculture is also given due importance by our government also in Chhattisgarh. And since this is the foundation day of the university, it has a special importance. So many people have been taught, attended the research, and research of this Sanjeevani rice, which will improve the immunity, is a great contribution to the country. Since this is the foundation day, I would definitely tell you that after going out of the university, the students, if we think of the nation, be proud of the nation and the society around you and the people, especially the downtrodden people of the society. They have very much problems, difficulties, and they are being deprived of many of the privileges due to their ignorance. So your first responsibility would be to stand by them and see that they are getting all the privileges provided either by the central government or the state government. Think for Mati, Ma and Manus, Mother, Motherland, and the people. India, as you know,
is the largest democracy of the world. And it is not only inside India, in the entire world, our Prime Minister had a great role to play. And the Prime Minister has said that there is no problem in the world which cannot be solved by discussion. He's talking of Viksit Bharat, whereas Amrit Azadi Ka Mahotsav, this Amrit Kal is going on. And I tell you that about 70% of the people depend on agriculture for their living. Therefore, all these importance by promoting different schemes by the central government, by the Honorable Prime Minister, is being implemented. We are the fifth economy in the world. And apart from all other development inside the country, our great pride is that what role we are playing also in the world politics. Agriculture is so important that go back to the days of Shastriji, when there was Indo-Pakistan war. At that time, Shastriji gave a call, Jai Jawan, Jai Kisan. Ask the Jawans, the countries in war with Pakistan. So save the nation, fight with all energy. And as you know, they opened 6 sectors and entered into Pakistan. After a week, there would have been a fall of Pakistan. But at that time, our best friend, Soviet Rus, intervened. And they said that there should be end of war, appealed to Shastriji, and there was talk, and what had happened, how the matter was solved, you know. Ask the Kisan, since your country is in war, production should be increased to feed the nation. And therefore, he asked them produce maximum of food for the people of the country. Then, in another region, to make the country powerful, the then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee had the atomic test. 2 atomic tests was done in 1998 on 11th May. And all the big powers pounced upon the Prime Minister, saying that, Mr. Vajpayee, you cannot have any test, atomic test. It is banned. Atalji did not say anything. 2 days after, he made another 3 atomic tests and boldly announced that India is now an atomic power. And due to our policy, we will not attack any country. But I hope no power in the world will venture to attack India. Then he added, Jai Vigyan, the contribution of the scientists. Then the age of Shastriji has come. During the
COVID-19 pandemic. You know the great menace has been posed to the entire country, not the entire country, entire world. And people are thinking that perhaps there will be greatest possible suffering by this COVID-19 pandemic. And he not only asked the doctors, doctor fraternity, and the people, but also asked the scientists to make research. Asked the doctor that you are the front-line warrior of this country. Save your country. Save the nation. Scientists gave the response to his call, started the research and find out preventive. Country with 144 crores of people, they are saved. Country with 144 due to the people, research of our scientists. Not only we saved this country, economically backward countries, 50 countries had been provided with our vaccines free. In world politics, as you know, we are playing a great role. Take, for instance, the Russo-Ukrainian war. At that time, both the powers, big powers of the world, they put pressure on India that you support us. But your country is in such a position that the Honorable Prime Minister stood firm, did not support any power, and appealed to them that where you are, don't make it an era of war. Don't escalate the war. By escalating the war, it will pose the greatest danger to the entire world. There will be unnecessary bloodshed. Lakhs of people will die. The economy of the world will be crippled. And economically backward countries, there will be starvation and lakhs of people will die. The people of the world want peace, not war. Therefore, India will not support any bloc, either a Russian bloc or the American bloc. They misunderstood him. But after 6-8 months, as you have seen, the spectacular reception which was given by Joe Biden, President of America, to our Prime Minister, for the stand he had taken. So, apart from all the research you are making inside the university, be proud of your nation, be proud of your people, and in whatever sphere you work, after going out of the university, serve the country, serve the nation, serve the society, and your people. Thank you all. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Chhattisgarh.
अब मैं संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। पहले देखा तो नीचे गिरेंगे पेपर। Honorable Governor, Chhattisgarh, Shri Vishwabhushan Harichandan ji, you are enormously benefited out of his discourse, guidance. Honorable Chief Minister, Chhattisgarh, Vishnu Dev Sai, he gave a thoughtful discourse, indicated steps taken immediately, and a futuristic outlook. Congratulations to him for getting into action immediately. He brings to the state of Chhattisgarh a new concept which the nation has seen, with Honorable President Shrimati Draupadi Murmu being the first tribal lady to be President of Bharat, home to 1/6 of humanity. Sri Ram Vichar Netam was a member of Rajya Sabha. Our loss is your gain. He is Honorable Agriculture Minister. Girish Chandel ji, Vice Chancellor of this great university, and he carries on his shoulders what this university will be in times to come. Shri P.C. Modi, Secretary General Rajya Sabha, Shri Sunil Soni ji, MP Raipur, Shri Motilal Sahu, MLA Raipur, Shri Anu Sharma, MLA Darsiwa, and distinguished members of the faculty, functionaries of the state government, and I have come for my dear students, boys and girls. I have especially brought here Secretary General of Rajya Sabha, Shri P.C. Modi, because in his presence, I am extending an invitation to the boys and girls of this university to be my guest at Indian Parliament. You will be extremely delighted to see the big change, that the new building of Parliament did not come in 30 months, more than that came into being. You will take pride and you will know our civilizational ethos being reflected and technological upgradation being at peak. I would request the Vice Chancellor to arrange in batches such a visit, which will be extremely gainful to the entire nation. On the 38th Foundation Day, a day of great consequence, मैं अन्नदाता को प्रणाम करता हूं, अन्नदाता का सम्मान करता हूं, अन्नदाता का अभिनंदन करता हूं. Being a farmer is a matter of pride. So is being son of a farmer. I am one. Farmers are backbone of our country's economy, and they contribute tirelessly, painstakingly, 24/7. Salutations to them. Our economy now is 5th largest in the world. Farmer contribution is immense. Boys and girls,
This contribution of the farmer will get incremental with your contribution. You will change the landscape of agriculture. You will change the landscape of agriculture economy. You will change the landscape of agriculture marketing. You will change the landscape of value addition to agriculture produce, and therefore gear up. A bright future awaits you in Bharat in Amrit Kal. You are major stakeholders and most impactful foot soldiers to make Bharat Viksit at 2047. You are the soldiers, and I have no doubt. I am full of hope, optimism and confidence. You will do it. If the farmer is happy, the nation is happy. Look at the immense pride and contribution of the farmer that since April 1, 2020, over 800 million people of this country are being fed, have been afforded food security, and Honorable Prime Minister has indicated for next 5 years also, only and only because in a land at a time when we used to import wheat, now our farmers are so competent and capable. From this stand, I would indicate to my young friends, boys and girls, you have to start a new chapter in agriculture economy. Agriculture produce happens to be the greatest market area. I would appeal to you to be influencers, inspire our farmers, their children, boys and girls, that they must take to marketing of agricultural produce also. If the farmer will be involved in marketing of agricultural produce, farmer children will not be looking for employment, they will be giving employment. When I look around, very talented people from IIT, IIM, top civil services are getting into marketing of milk, vegetables, organic grains. Why then not son of the farmer, children of the farmer? They are trained to deal with these things right from their birth. They must get into it. We must learn to add value to agriculture produce. आज के दिन हालात ये हैं कि किसान दूध, दही, ज्यादा से ज्यादा छाछ, सब्जी और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तक सीमित है. इनके जो वैल्यू एडिशन होते हैं वो किसान अब नहीं कर रहा है. इसकी शुरुआत यहां से होनी चाहिए. इतना बदलाव आ गया है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग किसान का परिवार करे, सरकार ने सार्थक कदम उठाया है. बट यू नीड ट्रेन्ड माइंड्स, डिसर्निंग माइंड्स, extremely qualified minds to motivate the society to do it, and that category is before me. You boys and girls have enormous potential if you will look at governmental policies, engage into startups, form clusters, take advantage of new cooperative mechanisms and policies. You engage massively in warehousing. भारत जो बदल रहा है, काफी गति से बदल रहा है. आपके सहयोग की वजह से ये रफ्तार और तेज होगी.
agriculture to the farmer is not a profession. Agriculture to farmer is not a matter of livelihood. Agriculture to the farmer is to make contribution to the society. क्योंकि जो अन्न देता है आपको, वो अन्नदाता होता है. We must always salute our farmers. We will have to motivate our farmers. They are already adopting it. And I'm extremely happy and delighted that when government started a scheme of PM Kisan Nidhi, one challenge was, how would the farmer receive money directly in his account? I'm happy to report to you that more than 110 million farmers in the country are getting that money directly in their accounts 3 times a year. It is a matter of pride for me that not only the government is capable of doing it, the farmer is capable of receiving it. And that's a big change. If we have to take to other challenges, ecology, climate change, farmer has a great role to play. I will appeal to every farmer in the country. Farmers must engage in massive plantations. The farmers must have vegetables in the backyard. The farmer must get technically updated. The farmer must look to new sources of energy. I am delighted when I go in the countryside and find solar energy being harnessed by the farmer extensively. It is farmer who has to tell the world, conserve water. You conserve water by utilizing it optimally. Farmer is doing it. Friends, for me this visit is like a religious visit. I have been to Chhattisgarh more than 200 times. I have traveled from Raipur to Bilaspur. I have appeared in the high courts. I have been enormously benefited by this land. I am happy that Vishnu Devji will nurture this land. He will ensure this land blossoms. There is a moment now that area of our country which is blessed by nature, which is a tribal population, has been gifted by the world, gifted by nature, recognized by the world as being home to natural resources. People now have to get the benefit of it. People must get full benefit of the natural resources that are in this state. Our tribal people, they have to be uplifted to a very high level. Their talent is enormous. Their potential has to be exploited. And the good thing is, आज के भारत में हर नवयुवक को, हर नवयुवती को अपनी प्रतिभा चमकाने के इतने सुअवसर मिले हैं जो पहले कभी नहीं थे. Boys and girls, let me tell you 3 बातें जो भारत को पूरी तरह बदल चुकी हैं. हमारा सोच बदल गया है. अब हम दुनिया में किसी के मोहताज नहीं हैं. हमने हमारी 5000 साल की संस्कृति को हमारे सामने रख दिया है. दुनिया ने उसको पहचान लिया है. और यही कारण है कि आज का भारत जिस विकास से आगे जा रहा है, दुनिया की संस्थाएं क्या कह रही हैं? इंडिया इज अ शाइनिंग स्टार इन ग्लोबल इकोनॉमी. It is the fastest large global economy in the world today. जिन देशों को हम देखते थे, हमारे सपने में वो आते थे कि क्या कभी कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका वैसी व्यवस्था हमारे होंगी.
आज ये जमीनी हकीकत है। इसमें सबका प्रयास है। एवरी भारतीय हैज कंट्रीब्यूटेड टू इट and the government policies have catalyzed it. We are world leader in several aspects. हमारे लोगों ने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को अपनाया है, ग्रहण किया है, हमारा जीवन को सार्थक बनाया है, कितना बड़ा सम्मान का विषय है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन यूएसए, यूके, फ्रांस और जर्मनी में एक साल में होते हैं। हमारे भारत में इन सबको मिला लो तो 4 गुना होते हैं। ये हमारे भारत की उपलब्धि है। भारत की युवा शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। और आपसे विशेषकर आग्रह करूंगा, छत्तीसगढ़ की भूमि में भारतीयता हमारी पहचान है। भारतीय होने में हमें गर्व है। वी मस्ट टेक प्राइड in our exponential phenomenal growth। पर आपसे ये कहूंगा कि हर परिस्थिति के अंदर आप अपने प्रयास को कुंठित मत कीजिए। नेवर फियर फेलियर। हारने के डर से, असफल होने के डर से यदि अगर आप किसी विचार को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसमें आपका नुकसान कम है, समाज का ज्यादा है। और कृषि के क्षेत्र में इसकी ज्यादा आवश्यकता है। आई विल एक्सोर्ट, अपील एंड प्लीड विद यंग बॉयज एंड गर्ल्स कि सिस्टमिक मैनर के अंदर आप पता लगाइए कि भारत सरकार की कितनी नीतियां हैं, सहकारिता विभाग ने क्या क्या ढांचा बना रखा है। उनमें से आप कुछ यदि अगर बदलाव का केंद्र बनेंगे तो गांव में क्रांति आएगी। मुझे वो दिन याद है जब 1989 में मैं लोकसभा का सदस्य बना, केंद्र में मंत्री भी बना, तो अमूल तो बहुत बड़ा नाम था, आज भी है। प्रोफेसर कुरियन बहुत बड़े हैं, उनको बुलाया गया। प्रोफेसर कुरियन आए। हम लोकसभा के 4 सदस्य थे जिनसे उनका साक्षात्कार होना था। मैं था, नाथू सिंह गुजर थे, हरीश रावत थे, एक चौथे और थे, वो हमसे ज्यादा प्रतिभाशाली थे, नाम याद नहीं आ रहा अभी। जब कुरियन हमें बताने लगे तो उस समय के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी ने कहा, कुरियन तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, पर इन्होंने तो जन्म ही गांव में लिया है, इनका पांव गोबर में रहा है, इन्होंने गाय और भैंस के थान देखे हैं, इन्होंने कुएं से पानी निकलता हुआ देखा है, खेत में धोरे देखे हैं, कुछ इनसे भी सीखो। आप सब सिखाने लायक हो। I see in you boys and girls a mix of the farmer and mix of the scientist like Mr. Kurian। आपने यदि ठान ली तो बदलाव को कोई नहीं रोक पाएगा। जब मैंने आपको ये कहा, इसके उदाहरण अनेक हैं। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, आपको पता लगेगा दूध का व्यापार वो कर रहा है जिसने IIM और IIT से शिक्षा हासिल की है। आपको पता लगेगा सब्जी का व्यापार वो करा रहा है जिसने बहुत बड़ी नौकरी छोड़कर यह धंधा लिया है। वैल्यू एडिशन में क्या कुछ नहीं हो रहा आज के दिन। एग्रीकल्चर में जितने स्टार्टअप्स की संभावनाएं हैं, आई अपील टू यू टू ग्रैब दैट। पैसे की कोई कमी नहीं आज की व्यवस्था में। आज नजर दौड़ाएंगे तो बड़े बड़े उद्योग इसी मामले में जा रहे हैं। आई डोंट वांट टू टेक मोर टाइम बॉयज एंड गर्ल्स, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि पहले कहा जाता था इसका इज द लिमिट। चंद्रयान ने बता दिया इसका इज नॉट द लिमिट। हमारे आर्यन ने बता दिया स्काई इज सर्टनली नॉट द लिमिट फॉर यू। अब आप एक काम कीजिए,
मेरे कहने से कीजिए। मेरी बातों पर गौर कर कर यू गेट इनटू ग्रुप्स, और आप यदि अगर चाहेंगे और इंडियन पार्लियामेंट में ग्रुप्स में आएंगे, आई विल ऑर्गेनाइज अ सेपरेट वर्कशॉप फॉर यू इन पार्लियामेंट, which will be addressed by Indian Council of Agriculture Research Scientists, और तब आपको पता लगेगा कि सृष्टि के निर्माण में, सृष्टि के विकास में, भारत के नहीं सृष्टि के विकास में आपका जो योगदान होगा वो अकल्पनीय, अप्रत्याशित होगा। और यही वजह होगी, एक प्रमुख वजह, कि भारत, विकसित भारत एट 2047 हमारे लिए सपना नहीं है, हमारा लक्ष्य है। हम लक्ष्य की ओर तीव्रता से जा रहे हैं, हम निश्चित पहुंचेंगे, और ये स्थान हजारों साल पहले हमारे देश को मिला हुआ है। मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला, और विशेषकर मैं बहुत आशावान हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से जितनी बात मैंने आज की है, उनका दिल धड़क रहा है, करने की लालसा है। इनका अनुभव है, इन्होंने वो जीवन जिया है, और जब आदमी जीवन जीता है तो बदलाव का केंद्र बनता है। ये निश्चित रूप से बनेंगे, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। और फिर नाम देख लीजिए, विष्णु, देव, और इनकी मदद कौन कर रहे हैं? कौशल्या जी। थैंक यू। इस उद्बोधन हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। हम अपने सभी सम्माननीय अतिथियों का आज की इस उपस्थिति हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आप सबसे सादर अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें।